This is Dhaka, the capital city of Bangladesh, and it is one of the biggest cities ever in the entire world. It is even called a megacity considering how big it is. Several predictions have even concluded that Dhaka will be the world's largest metropolis by 2025. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश के कैपिटल ढाका सिटी के बारे में। ढाका इस वक्त दुनिया का मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड सिटी है और दुनिया के जो बड़े तरीन सिटीज़ हैं उनमें ढाका का शुमार होता है। जिस तरह से इंडिया का मुंबई, पाकिस्तान का कराची है, इसी तरह से बांग्लादेश का जो ढाका है कैपिटल है बहुत बड़ा है और पूरी बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो ढाका पे बेस करती है। बांग्लादेश का जो कैपिटल सिटी ढाका है वो बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और ढाका में बहुत से पॉश एरियाज़ हैं और पूरे बांग्लादेश का जो सबसे रिच सिटी है वो ढाका है और पूरे बांग्लादेश की जो इकॉनमी है ढाका ने उसको सहारा दिया। तो आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है वाई बांग्लादेश कैपिटल विल बी द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस सिटी। तो क्यों बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका वो दुनिया का लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस सिटी बनने जा रहा है, ये डिटेल्स जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। This is Dhaka, the capital city of Bangladesh, and it is one of the biggest cities ever in the entire world. It is even called a megacity considering how big it is. Several predictions have even concluded that Dhaka will be the world's largest metropolis by 2025, along with Tokyo, Shanghai, Beijing, Mexico City, and New York City. But what makes Dhaka stand out isn't how big, but how fast it grew and how important it's going to be toward the future. The country's capital is well known to be one of the fastest growing megacities. Its population more than tripled in the last 30 years, with 500,000 people migrating each year. This then turned Dhaka from a measly small city to Bangladesh's financial and commercial hub, accounting for 35% of the entire country's economy. This massive growth, however, is not all economically beautiful. When a city like Dhaka becomes so big, so fast, it often comes with challenges. It resulted in a city with varying problems, but some of the direst ones pose a threat to the overall livability and social inclusivity of the city. Environmental pollution, intense congestion, and poor urban services are just some of the many more problems. If all of these are left unattended, these problems would just end up becoming larger and larger, and one day become a massive issue in the future. Thankfully, however, these are being met with solutions. The biggest solution the government has initiated is the construction of infrastructure. It has always been known that the capital has been laggard in infrastructure developments. It was a major constraint to the very growth of Bangladesh. According to experts, the country's infrastructure global ranking from 2016 to 2020 stood only at a rating of 2.3 out of 10, which makes it one of the lowest in the world. But in the next 5 years, from 2021 to 2025, the ratings are expected to jump to 4.5 out of 10. These infrastructures will push the capital into becoming a world-class city, which will become a place filled with innovation and futuristic technology. Some of the biggest initiatives fueling the economy of the capital are in the transportation sector. As the capital continues to grow, transporting tens of millions of people every day becomes essential. If left alone, it will become one of the biggest bottlenecks to the economy as traffic congestion are notorious for destroying economic activity. The biggest transportation master plan fighting these issues is the dhaka-chittagong high-speed railway, a 220-kilometer project that is expected to be one of the country's biggest plans ever in its history. It will carry at least 50,000 passengers daily and is expected to be finished by 2030. Furthermore, the cost of the project stands at a whopping $11.4 billion US. The expansion of its international airport has also reached a major milestone. The Hazrat Shahjalan International Airport will be constructing a third terminal, which will cost $2.5 billion. These costs will help push the airport's passenger handling capacity rate to over 20 million annually from just 8 million, making it one of the few big initiatives to help alleviate the congestions the capital is facing. As the economy grows further, the middle class of the capital grows as well, and demand for flights become the new norm for the people. Several more infrastructures are on the way, too much to mention in one video at least.
In summary, the other bigger plans are the Dhaka Metro Rail, Dhaka Subway, and even energy power plants. These infrastructures will be the backbone of the rapid growth in the country. As it turns into a more transit-oriented place, the compact, connectedness, and resilience of the city and its people would further increase and result in much higher productivity rate and economic output, which then ends up resulting in further improvements to other types of endeavors. As long as they do their part in transforming the city and its infrastructure, continuously combining different kinds of investments, then one day we will see Dhaka becoming a world-class economic major hub. Anyway, what do you think about Dhaka? Let us know your thoughts in the comment section below. जी, तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि ढाका यहाँ पे दुनिया का लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस सिटी बनने जा रहा है और ढाका टोक्यो जापान और शंघाई की तरह फ्यूचर में इन सिटीज़ की तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने जा रहा है और ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। जिस तेज़ी से बांग्लादेश ढाका को डेवलप कर रहा है उससे ये साफ साबित होता है कि बांग्लादेश की जो लीडरशिप है अपने मुल्क के लिए कितनी ज़्यादा मुखलिस है। अब यहाँ पे ढाका की आबादी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी वजह से अब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने जापान, चाइना और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मिलके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से टोक्यो, जापान, शंघाई और बड़े बड़े मेट्रोपोलिस सिटी में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे ढाका में मेट्रो रेल का आगाज़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ बुलेट ट्रेन जो कि 11 बिलियन डॉलर्स जिसकी लागत है, बहुत ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, उसको भी फ्यूचर में स्टार्ट करने का यहाँ पे प्लान है। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड मेट्रो और अंडरग्राउंड रोड, वेटेड एक्सप्रेसवे और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा और फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको कंट्रोल किया जाएगा। और बांग्लादेश का जो ढाका सिटी है दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस सिटी यहाँ पे बनने जा रहा है और यहाँ पे अब प्रेडिक्शन की जा रही है कि ढाका जो है बांग्लादेश की जो तकदीर है उसको बदल देगा और दुनिया के जो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके जो मेट्रोपोलिस सिटी हैं उनका मुकाबला यहाँ पे ढाका करेगा। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। किस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने के बाद 51 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है, जबकि पाकिस्तान 75 सालों में मुसलसल नीचे जाता जा रहा है। आज पाकिस्तान बैंकरप्सी के करीब खड़ा है, जबकि बांग्लादेश के कैपिटल के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस सिटी बनने जा रहा है और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बिलियन डॉलर के जो प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 2025 से लेकर 2030 तक मज़ीद जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट होंगे, वो यहाँ से लगें, जिससे यहाँ पे जॉब्स क्रिएशन होगी और पूरी दुनिया में जो ढाका सिटी है यहाँ पे लोग आएंगे और ये सिटी वाकई ही में एक मेट्रोपोलिस सिटी बनने जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बांग्लादेश का जो ढाका सिटी है ये इतना कैपेबल है कि दुनिया के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रोपोलिस सिटी हैं, उनसे मुकाबला कर सके? अपनी राय से मुझे कमेंट्स में आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।